हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरांग और मैं बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस का एक स्टूडेंट हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज लाइफ के बारे में और स्पेशली बिट्स की कॉलेज लाइफ के बारे में और साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा। तो मेरे साथ एक बहुत ही खास दोस्त है मेरा, निहार, हु इज़ ऑल्सो or who was also the president of BITS Pilani Hyderabad Campus Wall Street Club, is the president of 180DC Club from BITS Pilani Hyderabad Campus, which is, by the way, the world's largest student run organization. He's a great communicator, he's an amazing speaker, he's an amazing badminton player, yet he's so down to earth. तो आज हम उससे बात करने वाले हैं। इट वॉज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन विद हिम और ये 50 मिनट की कॉन्वर्जेशन थी, बट दिस इज़ जस्ट द पार्ट 1। और पार्ट 2 कब रिलीज़ करना है वो मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, क्योंकि ये एक बहुत अमेजिंग कॉन्वर्जेशन और बहुत ही एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है जो आपको मज़ा आनी चाहिए। और भाई निहार कैसा है भाई? All good, bhai. Long time, but it's good to finally talk again, catch up. बहुत सही, बहुत सही। लॉकडाउन कैसे चल रहा है? मतलब काफी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए कॉलेज गए हुए, मतलब Correct. अभी तो मिसिंग। अभी तो pretty much settle हो गए, comfort zone बन गया है and बन के properly erode हो के वह channel पूरा बन गया है। तो even though पता है कि ये healthy नहीं है, यहाँ से कभी ना कभी निकलना पड़ेगा, maybe even sooner the better, but निकलने की anxiety हो जाती है क्योंकि बाहर जाते ही discomfort दिखता है। अभी इतनी छोटा सा space, छोटा सा mind, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेनली जो हमें आज बात करनी है वो हम इसके बारे में करेंगे कि कॉलेज में जब हम आते हैं हम सबको लगता है कि कोडिंग इज द थिंग, और फिर कोड करा, फिर प्लेसमेंट में बैठे और फिर किसी बड़ी कंपनी में प्लेस हो गया, है ना? ये Yeah. मोस्टली परसेप्शन होता है जब भी हम 12th के बाद, जेई के बाद बैठ रहे होते हैं किसी कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। बट उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चाहे जब भी आप किसी पोर्टल पे जाओगे, चाहे आप बिट्स क्वेरीज पे जाके सर्च कर रहे हो या आप फेसबुक ग्रुप पे जा रहे हो आईआईटी जेई के, वहां जाके आपको सब बोलते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो कॉलेज सिलेक्शन में आपको चूज करना चाहिए, है ना? हमने नोटिस करा हो कि कोडिंग इज वन थिंग, राइट? बट उसके अलावा एक पूरा डोमेन है जहां पर इंजीनियर्स को एक्सप्लोर करना होता है। और काफी लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम आते इंजीनियर की तरह हैं, बनना इंजीनियर चाहते हैं, बट 50% लोग कुछ और ही निकलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं More इंजीनियर्स। than, more than. मोर देन 50%, राइट? तो फिर उसी बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि निहार, एज मतलब जितना मुझे पता है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इसके बारे में जिसने बहुत एक्सप्लोर करा है कॉलेज। रियली, आई मीन इट। मतलब काफी कॉलेज एक्सप्लोर करा है। लाइक I would not say that क्योंकि I was very careful to stay away from so many things in college, such as coding, unfortunately. So I haven't explored as much as maybe many other people, but I've tried my best to explore, and I still try to keep on exploring. Maybe, yeah. दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। तो इसलिए थोड़ा सा निहार बेटर रहेगा एक बार हम बता दे बाकियों को कि क्या क्या तुमने एक्सप्लोर करा। मतलब फर्स्ट ईयर से व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज काफी सारी एक्सपेक्टेशंस रही होगी कि ये करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बंदी पटाएंगे, पता नहीं क्या क्या ख्याल रहते हैं फर्स्ट ईयर में, है ना? Yeah. बट रियलिटी क्या थी? तुमने कैसे स्किल्स गेन करे डिफरेंट डिफरेंट क्लब डिपार्टमेंट से, चाहे वो सोशलाइज करके, नेटवर्किंग करके, क्या क्या, हाउ वाज द जर्नी? ये 4 साल 3 साल की जर्नी कैसी थी अभी तक की, थोड़ी बहुत? Okay. Firstly, just to get it out of the way, Bandi Patana is also pretty an experience, and it acha guru, whatever it is, it's probably something which will teach you as much as your professional experiences. So don't, I mean, एब्सोल्युटली। consider that as something which is completely isolated from it. But just to start off, I think to answer this question subjectively, I will have to give a little bit of my background. I hope it doesn't take too much time. हाँ, श्योर। But I have been interested in finance, I think, through my grandfather, who used to keep NDTV, CNBC on for like 20 hours every day. Even so they used to watch it. He used to get me to watch it. He used to make me read the Economic Times back in 7th, 8th, 9th. जब मुझे एक सेंटेंस भी नहीं समझता था, बट क्योंकि बोलते थे नाना पढ़ना है, so I used to read and read and it took probably 1, 2, 3 years, and धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होने चालू हुए
कि आई रिमेम्बर कि हाँ ओके मे बी मर्जर वहां पे भी कहीं पड़ा था, वहां पे भी कहीं पड़ा था वो कॉन्टेक्स्ट में, सो ये कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्ली मींस दैट। तो ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हुआ, नॉलेज नहीं कहूंगा बट बेसिकली मेमोरी, वो धीरे धीरे पैटर्न्स फॉर्म हो गए थे। But then again, 11th, 12th, JE coaching, I'm sure most of us who are watching this video, or most of us at least who are talking to, will have gone through it, will know कितना isolating process हो जाता है, where it just puts you in one phase, makes you do that. तो आफ्टर कमिंग थ्रू दैट थोड़ा वापस स्लेट क्लीन हो गया, वापस फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ा, बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई न्यू दैट फाइनेंस इज व्हाट आई वांटेड टू एटलीस्ट एक्सप्लोर द मोस्ट, राइट। करियर्स में उतना आइडिया नहीं था, डिडंट नो क्या जॉब्स होते हैं, कैसे होते हैं, बट आई न्यू कि मोर देन अदर थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, एंड ऑल्सो केमिस्ट्री टू एन एक्सटेंट, क्योंकि 2 साल उसमें ठीक ठीक था। So that's a separate thing, but right. So before becoming an engineer, I knew that I wanted to get into either finance or do an MBA per se, which I'm not sure anymore, but yeah. So coming into the college, the first club definitely which I made sure to join was the Wall Street Club, because I knew इसमें जाना है. Other clubs which I thought to join were the Economics Association and थोड़े related clubs, and then उसके बाद interest वाले clubs आ गए, photography club, all of these things. So I started off definitely with the Wall Street Club. I also somehow very coincidentally, I ended up joining 180 Degrees Consulting. So 180 Degrees Consulting, I mean, for the people who don't know, it's an organization which runs through branches in colleges, and it gives consulting to NGOs for free, where students themselves work hard to learn it themselves, tackle new challenges, and basically solutions provide करते हैं to people who can't afford BCG, McKinsey, Bain, Oliver Wyman, all of these companies. So उसमें I think one of my seniors was lacking a member in the team, जो टीम से उनको एक केस स्टडी करके सबमिट करना था फॉर गेटिंग इंडक्टेड इनटू 180 DC इन दैट ईयर। सो वो एक मेंबर लैक कर रहे थे, एंड मैं रैंडमली सैंडविच ऑर्डर कर रहा था C3 पे। उन्होंने देखा, मुझे बोला इसको कहीं देखा देखा, आई थिंक बैडमिंटन कोर्ट पे आता है ये, आई यूज्ड टू गो प्ले बैडमिंटन पहले से, तो बैडमिंटन कोर्ट पे आता है, इसको पूछ रहे थे। So they came to me, they're like, do you know what 180 degree consulting is? I'm like, no clue. They're like, Google कर अभी मेरे सामने। I'm like, okay, भैया, I'll Google it. They're like, join करना? I'm like, sure. like, ये कर। So 1 week, the 4-5 of us, we worked on that task. We made a PPT. We got inducted. So वो group में उसके बाद interviews हुए, a couple members didn't make it, and I somehow ended up making it, where I didn't even know क्या होता है ये पहले। So that's how I ended up in 180 DC, and क्योंकि मैं ही ऐसे find out कि others, मतलब people in my batch also probably didn't know about it at that time, but through 180 DC, I think I got a lot of exposure, not in terms of the work we did, but in terms of the people I met. Like a lot of seniors, because I was the only junior guy there, so everyone I interacted with was a senior. And fortunately for me, at some points, क्योंकि work same कर रहे हैं सब लोग, everyone's supposed to send emails and pitch clients, everyone's supposed to work on their task, find new clients, all of that stuff. So because the work was the same, fortunately for me, even at points the seniors forgot that I was a junior, and they started treating me like an equal, sharing the same stories which they did with everyone, talking. So they're discussing about their PS, they're discussing about what they're thinking of a startup, what they're thinking of where they're thinking of going into placements, all that. तो ये सब मैं भी वो रूम में रहता ही था। I used to make sure I didn't stay in my room, because first year में मेरा एक मोटो था कि I will not be in my room. I will just be outdoors somewhere or the other, कुछ नहीं तो अकेले बैठ के सैंडविच ऑर्डर कर ले C3 पे। Great. तो that was one motto, and I kind of try to stick to that. I कुछ नहीं तो दोस्त के रूम में PUBG खेल लेते थे, but कहीं ना कहीं रहते थे, रूम में नहीं रहता था। तो ऐसे कर करके उनके साथ भी मैं रहता ही था मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस में, सुन के काफी कुछ अगेन सिमिलर टू इकोनॉमिक टाइम्स। फर्स्ट ईयर में जस्ट आया था, ये लोग PS2 CGP ऑफशूट ये सब बोलते थे, मुझे समझता नहीं था क्या है, बट ओवर टाइम सुन के वो डॉट्स कनेक्ट होने लगे कि राइट ऑफशूट, राइट दिस, राइट दैट। तो ऐसे करके बहुत एक्सपोजर मिल गया जस्ट बाय बीइंग इंक्लूडेड इन दोस कन्वर्सेशंस एज अ पीयर। मतलब दे वर टॉकिंग टू मी और ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी, बट आई वाज जस्ट प्रेजेंट देयर। सो एक इनेट क्यूरियोसिटी भी थोड़ी जाग जाती है कि इनने बोला है पता नहीं है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट बाय माय सेल्फ, स्टफ लाइक दैट। तो थ्रू दिस आई फाउंड आउट, सो वन ऑफ द डिस्कशंस एक रात 180 DC के ग्रुप में, आई थिंक आदित्य भी वन ऑफ द सीनियर्स, ही वाज मेंशनिंग अबाउट ऑल द कॉन्फ्रेंसेस ही हैड गॉन टू हार्वर्ड प्रोजेक्ट and all of that. He I think that year only he had gone to World Business Dialogue in Germany. So even I started looking up conferences. I applied to one of those conferences, wrote essays, long essays for a week, sent in the application, and I got selected.
तो उस बहाने और Oh, एक्सपीरियंस हो गया मेरा, अर्जेंटीना जाने मिल गया स्पॉन्सर ट्रिप पे. सो through these kinds of things, just by listening to them, just by trying to research थोड़ा myself, just by picking up क्या क्या कर रहे हैं लोग, खुद थोड़ा उसमें मतलब रिसर्च करके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्लिक होते गया वो. So what that a was my first crazy step. journey. That I guess looking back maybe, but at the time I was just trying to just, I mean, look forward and follow rules. मेरा rule की basically जितना don't say no to or anything which you मतलब don't feel very widely uncomfortable with. And Mhm. yeah, just I mean, जो भी whatever makes sense. Don't stop yourself for selfish reasons, and selfish reasons such as mood नहीं है, such as थक गया हो, such as stamina, मतलब feeling fatigued, हाँ, tired, burnt out. These are selfish reasons. You can right, stop right. when it comes to actual objective, physical, or I mean external reasons. You actually know that what they're suggesting or what they're asking you to do is not good or not good. I mean, great, not ethical, not moral, or it won't help you. Then you can stop. But for just selfish reasons, listening, I mean, to your own voice inside, if it's just acting out of laziness, then don't listen to it. Absolutely भाई, मतलब बहुत ही परफेक्टली समराइज करा, और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि C3 में सैंडविच खाते खाते यू एंटर्ड इनटू 180 डीसी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू नो दिस. ऑसम भाई, ये तो काफी That's सही what था. happened. देन हार्वर्ड, बाहर वो सब. एंड यू मेंशन्ड अबाउट दैट स्टोरी अबाउट कि तुम ग्रैंडफादर के साथ बैठ के फाइनेंस Yeah. चैनल्स देखते थे, राइट? मेरे Yeah. साथ भी ऐसी कुछ था. 12th तक तो आई लिटरली हैड नो आइडिया अबाउट फाइनेंस. मैं Mhm. ऐसा था, एकदम पढ़ाकू बच्चा, 11th 12th में पढ़ूंगा, आईआईटी जेई, आईआईटी प्लेसमेंट, Oh, बस. bhai. हाँ. राइट, बट 12th जैसी खत्म हुई, पापा ने बोला थोड़ा सा इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपने आप को घुलाओ, मतलब Expose कर ले. एक्सप्लोर करो. हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स देखो, दुनिया सही में समझो, बिजनेसेस क्या है. तो उन्होंने रिच डैड पुअर डैड एक बुक रिकमेंड करी, जो मोस्टली सबकी फर्स्ट बुक होती है फाइनेंस फील्ड And में. a very good first book as well. एंड वेरी गुड बुक, राइट. Yeah. आई ओपनर, सीरियसली. Yeah. तो वहां से उन्होंने बताया कि, मतलब पापा ने मेनली बताया कि इन्वेस्टमेंट है, क्या होता है. पहले तो यही लगता था कि बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, वहीं 4% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो ग्रो होते अमीर बन जाएंगे. बट रियलिटी जब पता चली कि भाई बैंक में पड़े पड़े एक्चुअली पैसे लूज हो रहे हैं, Close होता है. जब वो रियलिटी पता चली, इट वाज शॉकिंग. बट मतलब बिट्स में आके और भी शॉकिंग पता है क्या लगा? ये लगा कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर तक आके लोगों को एक्चुअली इसके बारे में पता था, बट अगर किसी और जनरली लोगों से बात करें तो उनको इतना फाइनेंस के बारे में नहीं पता होता, कि इन्वेस्टिंग के बारे में इतना नहीं पता होता. Right. तो आई थिंक बिट्स ने इस चीज में काफी हेल्प करी हमारी, अपने आप को ग्रो करने में, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस स्पेशली. जैसे माइनर इन फाइनेंस का हमारा कोर्स है, राइट? Yeah. वहाँ पर 5 कोर्सेज हैं, दे आर प्रीटी गुड कोर्सेज. मतलब लोगों को काफी पता चल जाता है वहां से, और 200 कुछ 200 300 बच्चे अप्लाई करते हैं हर साल उन कोर्सेज के लिए. तो आई थिंक दैट्स रियली गुड. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइनर इन फाइनेंस, तो would you like to share something about minor in finance, like how, क्योंकि तुमने भी 5 कोर्सेज करे हैं माइनर इन फाइनेंस के, आई नो 5 या 6 कोर्सेज जो भी है. तो how are they really impactful, how have they really been impactful in your life and as a career, लाइफ में भी और करियर में भी, दोनों के पर्सपेक्टिव से कैसे सही में एक इम्पैक्ट उन्होंने डाला है माइनर इन फाइनेंस ने और बिट्स ने? Right. So full disclosure, मैंने अभी तक 5 कोर्सेज नहीं किए. मेरा 5th ओह, कोर्स अभी भी चल रहा है. I am doing it. ओके. So I will definitely not speak completely from my own experience, and definitely I'm not the most or even quite enough qualified person to completely give my opinion on this. But one thing I think which I can try to share is what I've heard from my seniors, from alumni, from the people around me. क्योंकि इस मामले में I've been exposed to a lot of people who have done this, who have reaped the benefits of this. So maybe what I've kind of noticed or put together in my mind about as an opinion about the minor in finance is that we are very lucky to have it in our college. Absolutely. Because just completely out of the way, just thinking analytically, job market dekho tum, you see all of these people from IITs, other bits, everywhere, from even foreign colleges competing to get good jobs in finance companies, to get good jobs in financial firms, advisories, all these places, even to go for an MBA in finance. Hmm.
most of the people, in order to prove themselves that right, they have the required financial background, they have to go out, pay a lot of money, pursue probably a CFA degree, maybe get a lot of online certifications, even though I'm not sure if that helps a lot. But to prove themselves right that they have required knowledge to actually step into this field in a decent role, they have to go out of their way, look for courses, look for stuff which can give them that stamp. We don't. Yeah. We spend our 3 years not just growing, but this minor in finance degree gives us firstly that stamp, right? That you have done this course, and it also quantifies our knowledge. Unlike other degrees and certificates where it's just passed and you have this degree or certificate you're earning, Right. it quantifies it in the terms of the scores, in terms of the grades you're scoring. These companies look at your transcripts, look at these specific courses called the offshoot score. They look at it, then they can instantly tell that how much domain knowledge you have, even though that's not an indicator of how good how good an investor you are, how good an analyst you are, because you can definitely grow. You can learn in different ways. Some people learn better theoretically, but others learn better practically. Right. But end of the day, you have that stamp on your profile that yes, this guy is qualified to a pretty good degree. That's the first thing. The second thing is the timing when the minor in finance is introduced to us, when finance is introduced to us. Most of these people in IITs, not IITs per se, I don't want to name drop, but most other colleges, when they are going into finance, they're doing the CFA, etc., which comes into the picture final year may or after graduating. Graduation ke baad 1-2 more years goes into actually just getting a whole complete picture of finance itself, doing an MBA, all of that stuff. For us, we're learning it after 12th, basically 1 year after 12th. Second year se start ho jate courses apne. Third, fourth, fifth year tak jate. We're gaining all this information about how the world works, how things work, how practically finance is working. But at the same time, we're learning it in theory to guide our practical, matlab jo bhi exposure aa raha hai. So we're seeing things happening, and then we can also relate why they're happening. Uske piche we can build justifications on that. So the simultaneous process ho raha hai of learning from both sides. एक just to explore, see पहली बार क्या हो रहा है, and then to actually learn about it by our, I mean, experienced professors as well. So I think that's the Absolutely. second benefit of that. And again, I think our courses, they cover topics very well, but in the end, I think how the education system in which works is that you have to study by yourself. नहीं तो कुछ मतलब नहीं है. Every engineering college. तुम प्रोफेसर पे डिपेंड नहीं कर सकते, तुम किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते. खुद लेके बैठो, समझो, यूट्यूब पे 10 टाइप्स के वीडियोस देखो. अश्वत्थ दामोदरन लेजेंड, God of Valuation videos जब देखोगे तो you will start piecing it together. It's a fun process, but you have to do it yourself. You have to put in the effort. Absolutely. That's probably my takeaway, but I know it's not comprehensive. It's not the most final conclusion. I'm pretty sure you will be able to paint a much better picture since you have. My opinion is pretty much the same. बल्कि बस ये है कि अगर तुम कोडिंग भी कर रहे हो ना, किसी भी लाइन में जा रहे हो, irrespective of the line, ये जो थोड़ी सी नेसेसरी नॉलेज है फाइनेंस की, ये सबके पास होनी जरूरी है. कि तुम जब जॉब लग रही है तुम्हारी, यू आर गेटिंग अ 40 lakhs पैकेज, और बट तुम 40 lakhs में से सपोज करो 20 lakhs सेव करो, एंड यू यूजिंग दैट 20 lakhs जस्ट टू पुट इट इन द बैंक, राइट? उसका कोई वर्थ नहीं है. लाइक तुमने 4 साल कॉलेज की पढ़ाई करी, बट एक्चुअली यू डिडंट रियली ग्रो योरसेल्फ. तुमने वो जो लाइफ का फाइनेंस वाला एस्पेक्ट है ना, वो अपने आप में इनकलकेट नहीं करा. क्योंकि आखिर में तुम जॉब किस लिए चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो, बट एक्चुअली तुम पैसा यूज करना नहीं सीख रहे. बट जब बिट्स में आते हैं, थोड़ा सा ये फाइनेंस के कोर्सेज या थोड़ा सा जो कल्चर होता है, आई थिंक इट हेल्प्स in guiding that person in a right direction financially, in terms of finance. Do you have any say about for the? No, I was just coming back to the minor in finance, but one thing I remembered is that recently some of my friends, lots of my friends started working at these banks, Right. big huge investment firms, banks, all of that. As some of them are doing internships, some of them have full-time roles. And I was talking to a few of them recently, random topics, when this came up, and they mentioned that minor in finance, even though after all the pros that we mentioned about it, one thing is that directly use nahi hota hai in their jobs itself. So even though it's a pretty good indicator to companies ki isko knowledge hai, he is a pretty good candidate to hire, what we learn in the minor in finance in theory is not directly applied in most entry level jobs. Definitely, if you're going for something very specific like a valuations analyst, then the BAV course, which is business analysis valuation, that will definitely help you.
and if you're doing Absolutely. equity research, SAPM, etc., would help you, but only to a certain degree, क्योंकि again theory और practice में काफी gap आ जाता है. तो it's you can't expect to do the minor in finance course and then be able to take on any financial job without spending a day learning, because banks में भी ये लोग enter कर रहे हैं and they're spending 2-3 weeks just learning about the systems used, about the theory used, all of that stuff, and then they're moving forward. So that's one thought which came to mind. That's an interesting thought. मतलब क्योंकि सिर्फ गेन नहीं है माइनर इन फाइनेंस के, उसके थोड़े मतलब डाउनसाइड तो नहीं, बट इतना यूज नहीं है जितना शायद लग सकता है, जितना हम शायद पिच कर रहे हैं. तो दैट्स अ रियली गुड पॉइंट. बट उसके साथ साथ जैसे यू मेंशन दैट हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं मिलता माइनर इन फाइनेंस से. तो I always mention कि I joined Wall Street Club in my second year and it was literally the मतलब जो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट some type of. तो मतलब जो बिगेस्ट लीप जिसने मुझे फाइनेंस के फील्ड में दिया, that was Wall Street Club. And you were the president of Wall Street Club. You were also the treasurer of Wall Street Club. We worked together for 1 year, rather 2 years. That So was great. that great experience, like fun Yeah. times, right? तो उस एस्पेक्ट में आई थिंक वॉल स्ट्रीट क्लब फॉर मी पर्सनली इट मतलब क्या होता था कि आई यूज्ड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट फंड मीट्स. वहां पर एक स्टॉक पिच कर रहे हैं. जब मैं पहली मीट में गया था, आई रिमेम्बर आई डिडंट रियली नो कि आईपीओ में लॉट्स का सिस्टम होता है. सीरियसली आई डिडंट नो दैट. Even me. हाँ, जब मीट में गए, जब डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ के बारे में, तब जाके पता चला ओ लॉट्स होते हैं. अच्छा, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें. जब ये सब पता चली, मतलब काफी दिमाग खुला और एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से दिमाग खुला, राइट. तो मेरा इसलिए ये बहुत मतलब एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वॉल स्ट्रीट क्लब. बट यू वर द प्रेसिडेंट, यू वर द ट्रेजरर, यू मैनेज टुगेदर काफी सारे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वॉल स्ट्रीट क्लब एज इन अ होल? First and foremost, the I think 1.5, almost 2 years which we had together in investment fund. You were the fund manager, I was the director. I was trying to handle the logistics behind. I think those were definitely one of the top highlights of my college life from HRD. But even though they were online, I think they were so fun. We used to stay out Seriously, yes. 4 hours at night until 3 a.m. just talking about random Right. stuff. Fun You, me, times. all of us. So that was really, really great. That's one thing. Second thing, funny story about Wall Street Club again. I'm not sure if I should be telling this, but अब बात करी गई है तो कर लेते हैं. तो कब Wall Street Club में भी first year में I came in very excited. I was very happy. I went to all the meets. I tried to do my best to participate. But second year में I think कुछ मीट्स मेरी मिस हुई थी स्टार्टिंग में. देन पर्ल में बहुत बड़ा कंपटीशन था जब पूरे क्लब की बॉन्डिंग हो गई थी थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द WSBC व्हिच इज द वॉल स्ट्रीट बिजनेस चैलेंज. तो वो यूजुअली आई मीन एज यू नोटिस इन कॉलेज तुम्हारी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में होगी. चीजें मतलब इट विल बी ड्यूरिंग फेस्ट, इट विल बी ड्यूरिंग ऑल दीज इवेंट्स. अब तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, यू आर डिपेंडिंग ऑन पीपल, यू आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, थक के बैठे हो के हो गया काम, ऑल दैट. सबसे ज्यादा बॉन्डिंग वो होती है. एंड वॉल स्ट्रीट क्लब की मेजर बॉन्डिंग पार्ट मैंने मिस कर दिया था बिकॉज आई वाज आउट ऑफ टाउन. आई थिंक आई वाज नॉट वेल एंड आई हैड गॉन बैक टू माय होम टाउन. तो दिस होल थिंग बिकॉज आई मिस दैट. नेक्स्ट कपल ऑफ मीट्स में मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था वॉल स्ट्रीट क्लब में. आई वाज थोड़ा सा लॉस्ट. ऑल दीज पीपल हैड देयर स्टोरीज, ऑल दीज पीपल आई मीन मेरी उसके बाद भी एक आध मीट्स मिस हुई थी. एंड आई वाज गेटिंग distracted. But then finally after party हुई थी वॉल स्ट्रीट क्लब की. Finally I at one point I almost considered कि should I leave the club, should I just try to study by myself, etc. But then after party हुई थी, I think बाजू में अलंकृता में everyone had gone, and even I was hesitant to go because I didn't feel very involved as part of the club because I was by myself थोड़ा सा way. I thought कि no boss. Even I think the seniors, because they were so nice, they still regarded everyone as members of the club. They were like, no, you have to come. You've been part of the club. You have to join us. It doesn't matter if you've been close, if you've been distant. Just come. Even if it's your last time, just come on. Went there. वहाँ पे जो बातें हुई है, वहाँ पे जो डिस्कशंस हुए, बैठ के रैंडम टॉपिक्स पे, वॉइस असिस्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस एवरी रैंडम टॉपिक. आई डोंट इवन रिमेंबर हाफ द थिंग्स, बट वहाँ पे हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. आई वाज टॉकिंग टू ऑल दीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर राइट्स, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग.
even I think रात के we came back to campus रात के 2 बजे तक जब तक hostel नहीं जाना था, we were sitting somewhere and just talking about placements, about this, that, every topic सब cover हो गया, and that was honestly one of the best conversations or best nights I had in my first year. And वो देख के I was again properly rejuvenated, like this place I want to continue in. And somehow, even though बीच में थोड़ा distant हो गया था, even seniors must have noticed. After that, I applied for the treasurer. I was very enthusiastic. उसके बाद I think 1 month ही बचा था until the semester end. So वो 1 month में I put my all in, and I applied for the treasurer. And fortunately, they made me the treasurer. फिर उसके बाद treasurer बनने के बाद I was like, this is it. I am going to put all my energy into this. I'm going to put my effort into this club. I think this club will be good, if not for me now, hopefully for the people in it, hopefully for the juniors, all of that. Effort was clearly visible. So that was really fun, man. Uske baad to I just thought ki I mentioned that I had gone to this one conference. I met a lot of people there. Some people had started their own consulting club in their campus. One of the guys was a lawyer who had started his law firm, who had started not a law firm per se, but who was giving law services to a lot of NGOs. There was one person who was doing his own projects independently. कौन की Wall Street Club के members थे? No. In the conference, right? So there Okay, were okay. lots of inspiring people there, and I came back to campus second year start होते ही, and I was thinking, what am I doing with my life? अरे ये लोग मेरे एज के हैं, मुझसे 1-2 साल बड़े हो गए, and they've done so much. They've been able to start this, create this much impact, do all that. Why are we not doing it, right? I was looking at a campus and I was thinking कि कितना कुछ हो सकता है just with our age people, and they're all super intelligent guys. They've gotten into BITS, I mean ऐसे ही. So I knew कि capacity है, potential है, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो I think the only thing needed is to actually light that spark, and I'm sure there's enough fuel to take it into escape velocity. So somehow, I mean, just I think randomly idea आया था कि investment fund start करेंगे, because that's something which has not been done, which should be done. I talked to my seniors about it. Ratnam, who was the president that time, we took the idea to him. All of us, Harish was there. We discussed it. We sat down there like, sure, go ahead, why not? उद्देश्य तो हाँ कर ले भाई, क्या दिक्कत है? But at the same time, I knew, and I still know, and even throughout my term as the investment fund guy, I knew कि मुझे फाइनेंस का nearly not enough knowledge, मतलब nearly enough knowledge नहीं है जितना बाकी लोगों को है. You, Ratnam, lot of other people. But I knew one thing कि मुझे knowledge नहीं है तो it doesn't matter, और कोई कर नहीं रहा है, but I'm doing it, right? So I will do my best to support the people who have that knowledge. I will do my best to fulfill their needs, whatever they need to actually impart the knowledge, to actually multiply it, spread it, use it, apply it, all of that things. I will make sure they don't face issues with that. And at the same time, of course, by just being there, sitting there, like मेरा बचपन का strategy, बस बैठ के शांति सुनते रहो, कुछ ना कुछ क्लिक होते रहेगा, वैसे कर करके थोड़ा knowledge increment, काफी knowledge increment हुआ just by listening to you guys. But that's been my motto कि ठीक है, if I can't do it, it's okay, not a big deal. I'll get people who can do it. नहीं, I don't think, मतलब the thing was that whenever we had meets, your viewpoints were very, मतलब ऐसे थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले व्यू पॉइंट्स थे, हर पर्सपेक्टिव को सोचने वाले. दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट यू कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्टॉक, हम एक एंगल से देख रहे हैं, बट यू विल ब्रिंग इन अ न्यू व्यू पॉइंट, सो दैट विल चेंज द एंटायर कन्वर्सेशन. सो जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, स्पेशली इन्वेस्टिंग में व्यू पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग इन जस्ट वन डायरेक्शन, वी आर थिंकिंग इन वन डायरेक्शन, बट व्यू पॉइंट्स जो अलग अलग आते हैं, पर्सपेक्टिव हमने सोचा ही नहीं होता कि हाँ ऐसे हो सकता है. 2008 में हाउसिंग बबल क्रैश हो गया, मतलब किसने सोचा था, है ना? तो ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स व्हेन दे वर कमिंग, इट वाज रियली गुड. I might have I guess a little explanation for that. I mean, again, अभी तो अपन properly off the top of our heads पूरा freestyle conversation हो रहा है, तो I'll just take my shot. But maybe because I always considered myself to not, I mean, be as knowledgeable as you guys, right? I always thought कि मुझे पता नहीं है क्या है, so in order to understanding, I have to go back to the basics. Every time I have to go back to the basics. Every time I have to break it down into chunks which I could only understand. So matlab just teach myself, or just have you guys talk to me like a 5-year-old or like a
golden retriever, right? Talk to me like That was good for everyone actually. so yeah, so I guess बाकियों को भी जिसको understanding नहीं है वो उसको हो रहा था, and I would just ask people to just explain it simply, just break it down. If they couldn't, I would do my best to break it down. And because मेरे को मतलब उतना था कि नहीं, मुझे उतना नहीं आता है, मुझे उतना नहीं पता है, so I will try to learn it from the basics, from the ground up. तो ग्राउंड अप जब बिल्ड कर रहे हो, एक छोटे छोटे ब्लॉक्स एक दूसरे पे रख रहे हो, तो वो जो शेप बनता है दैट समटाइम्स बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम जो प्री मेड प्री स्टिच शेप जो है, तो वहां से शायद लैटरल इनसाइट्स आ जाते हो. मतलब ये तो काफी बहुत ही अच्छा पॉइंट है. प्लस इसके साथ एक और चीज दिमाग में आती है, जब हम जैसे थर्ड ईयर में मैनेज कर रहे थे फंड को, क्लब को, हम ये देखते थे जूनियर्स के अंदर जो भी नए नए आ रहे हैं अभी फ्रेशर्स वगैरह, उनमें हम ये देखने की कोशिश करते कि हो सकता है उनमें इतनी नॉलेज ना, फर्स्ट ईयर में किसके पास नॉलेज होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट द थिंग वी वर ऑलवेज लुकिंग फॉर कि इज दैट पर्सन रियली क्यूरियस. सो इट मतलब वो तुम्हारे वाले पॉइंट से आ जाता है कि यू आर ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन स्टफ टू मेक इट मोर सिंपलर. सो दैट इज द पॉइंट कि अगर तुम क्लब ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें ऑलरेडी एक नॉलेज होनी चाहिए, पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए. इट्स मोर अबाउट जब भी हम देख रहे होते हैं, हम इंडक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम, मतलब जब हमने लीड करा है फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट, हम हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि इज दैट पर्सन रियली एक्साइटेड. लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब हम इंडक्शंस ले रहे थे, एक बंदा था जिसने इंटरव्यू दिया और फिर then he left the meet and then he had one doubt, he rejoined the meet just to ask that one doubt. So उसी you remember that? Yeah. तो मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें होती है, but they tell really that how much you're really excited about finance, how much you're really curious about to learn a new thing. So that was some really मतलब it was an experience. And just to add to this point, like usually जब हम कॉलेज में आते हैं, we are basically kids in terms of jargon आ जाता है, बहुत सारे concepts आ जाते हैं जो नए होते हैं, इन्वेस्टोपीडिया पे देखो ये करो वो करो, all that, and not just in finance but in जो लोग कोडिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे नए concepts आ जाते हैं. Any field you try to see, कि तुम्हारे seniors है, you're seeing them talk in all these fancy terms, jargons, all that, so तुम्हें लगता है कि the way up is more complexity, it's more मतलब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करना, ऑल ऑफ दैट. बट वंस यू एक्चुअली रीच योर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, व्हेनेवर यू रीच दैट पॉइंट वेयर यू हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, you might end up figuring out that it's not more complexity which actually results in good outcomes, but it's the ability to make things simpler and simpler and simpler. So now what I would look for अभी भी काफी, मतलब I think one of the key highlights of my last 2-4 years PORs जो होते हैं, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इतने इंडक्शंस लेके इतने लोगों से बात हो गई, इतने लोगों का पर्सपेक्टिव समझा. One thing which I have learned to look for is the ability to break things down into simple things, into simple concepts, blocks, chunks, digestible pieces. So someone is able to take a very big issue or even a medium sized issue, whatever it is, they're able to just pull out all the strings, जैसे ये है, organize their thoughts, clarity. So that comes when you're thinking like a child, right? When you're thinking like you don't know anything and you're just trying to take it एकदम blank slate से चालू कर रहे हो, you're just being very down to earth with your own knowledge. So my point was that when you are coming into college, you feel that धीरे-धीरे knowledge बढ़ के these people are so above the ground. They're talking all these fancy terms and they have so much knowledge, right? But they're above the ground. But above the ground होने से I think उतना value तुम add नहीं कर पाते, उतना impact नहीं create पाते, जितना you just be there by staying on the ground, being low, respecting your own boundaries, circles of competence, and you're starting to just break things down into the simplest pieces, trying to explain it to yourself like you were a child. What a great point, seriously. मतलब like मेरे पापा भी हमेशा मुझे यही कहते हैं कि तुम्हें चीजें तब समझ नहीं आती when you understand the complex stuff, but actually तुम्हें वो जब चीजें तब समझ आती है when you are able to understand stuff and explain it to a child, explain it to a 5-year-old, right? It's timeless wisdom, that is actually the real understanding. And that was just part 1. और part 2 में निहार की एक स्पेसिफिक एडवाइस है जिससे maybe you'll be able to make a little more of your college life. और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. तो पार्ट 2 में मंडे को निकालो या वेडनेसडे को, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जिससे मैं डिसाइड कर पाऊँ कब निकालना है. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, और रादर वील सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर.